Hi guys, good evening. Right now it's about 7 p.m. and today is 7th of October 2021. So guys, I'm going to make two videos today. One video on Nifty's open interest and Nifty, and the second video I'm going to make is going to be on a very nice stock that I have filtered for you. I'm going to invest tomorrow only at least 5 lakh rupees in that particular stock because I expect a target of about 6 to 7,000 rupees, but in 1 or 2 years, right? I'm going to tell you in my next video. This video is all about Nifty, its option chain, and what could be expected from the market, and one FNO stock. So guys, this is my, I'm your host, Dr. Seema Jain. I'm a PhD in physics from IIT Delhi, SEBI registered research analyst. I am chief mentor at StockPro and founder StockPro, and also I'm partner with Zerodha Upstocks Fires and Astha Trade. So you can follow me here and you can find live trades here, or you can find me on my channel where also you can get the live trades. So this is my YouTube channel. You can follow me here for really, some learning, and it's a full university. It's a stock market university. You can go through this channel and you will find so much of information, so much of learning. I don't think any other analyst have done this kind of work, right? So join me here, and then after that, what you can also do is follow me on my Telegram channel, which is Stock Pro Official, right? Stock Pro Official SEBI registered. This is where I am pretty much live, and today I've given a trade of Relaxo at 1232, and it almost gave 100 point from this point, right? From this place it has given almost like 100 points. See here, the high made was 1351. 120 points is what we precisely got from here, right? Then I have given a trade on Oberoi Reality, right? Oberoi at 893 we bought. I gave a trade on Bandhan Bank. So have a look at all of them. Oberoi Reality 893, when I gave a buy, it made a high of 950, right? That's the high it made. Bandhan Bank 310 was given as a buying of place, and it made a high of 330, right? And then Indus Tower or in hotel also I have given, right? I think I have given in hotel. Let me just have a look. Indus Tower at 320. Indus Tower, I don't know Indus Tower where it is, but these were the trades. You can have a look. They're almost top gainers today, right? So you can follow me at all these places. I've told you, you can follow me on Telegram, you can follow me on Twitter, you can be watching my YouTube videos where you get a lot and lot of learning, and of course you will understand market in a much simpler way. So now let's start with our understanding of market today. So market has formed a doji. Doji is an indicative of indecisiveness. दोजी का मतलब है मार्केट में indecisiveness है. मार्केट को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ये मार्केट को अभी समझ नहीं आ रहा है. मार्केट पहले फ्लैट रहा, फिर ऊपर गया, फिर हॉरिजॉन्टल एंड देन फेल, राइट? बट ये जो आज का ना हाई ब्रेक किया फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर दिस ड्यूरेशन हाई वाज ब्रोकन, बट दिस बाउंड्री वाज नॉट ब्रोकन, राइट? तो इनडिसाइसिवनेस मार्केट में थी, मार्केट में एक क्लैरिटी नहीं थी, एंड उसके चलते आज यू कैन से बिकॉज ऑफ एक्सपायरी ऐसा था. अब हम एक काम करते हैं कि हम अगले हफ्ते की एक्सपायरी देखते हैं, कहाँ पे लोगों ने आज क्या ऑप्शंस को राइट किए हैं. जो लोगों ने आज अपनी पोजीशंस क्रिएट होंगी उससे हम कल के बारे में कुछ सोच समझ सकते हैं, या आने वाले हफ्ते के बारे में कुछ समझ सकते हैं. तो जस्ट हैव अ लुक, यू जस्ट हैव अ लुक हियर कि ऑप्शन साइड में, कॉल साइड में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं. बहुत थोड़े, और रादर ये अनवाइंड हुआ है. 1,000 contracts have been written here. ये unwind हुआ है. Small 5,446 contracts have been written. These are all unwinded, right? Whereas on the put side, if you see, the contracts written are 10,800 something, 500 and something, right? It's going to build up, right? अभी तो beginning है next week की, तो अभी build up होगा यहाँ पे. But as of now, what we see is actually the market is going to remain positive only. That's what it looks like, right? And
I have a feeling market is not going to stop anywhere. Market is not stopping anywhere. आज इसने क्या हाई लगाया है? Market 17,888,808. मार्केट में मुझे लगता है कि अगले हफ्ते इसको हो सकता है कि 18,000 के ऊपर इसका क्लोजिंग बने, राइट? सो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनता है इसका 17,885 पे. अगर ये बैरियर क्रॉस हो जाता है, then I'm 100% expecting a big blast till about 18,000, राइट? तो ऑप्शन चेन को भी देख के यही लगता है कि कोई खास बैरियर है नहीं, राइट? मार्केट में कोई खास बैरियर है नहीं. अगर आप 18,000 देखोगे तो यहीं पे जाके कुछ थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग हो रही है. 20,000 वहां पे भी आज थोड़ी सी कॉल एंड वाइंडिंग हो गई है. तो मार्केट लुक्स डेफिनेटली वेरी वेरी डिसेंट एंड पॉजिटिव. सो अब करते हैं बात की मेरे रडार पे एफएनओ सेगमेंट में कौन सा स्टॉक है. मेरे इस रडार पे एक स्टॉक जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ अभी वही है, क्योंकि मैं उसको एक्सपेक्ट करती हूँ कि उसको अच्छा खासा मूव देना चाहिए. आई डोंट नो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बट मैंने अपने स्टूडेंट्स को पेज इंडस्ट्री का कॉल ऑप्शन बाय करने को दिया था, राइट? पेज इंडस्ट्रीज का कॉल ऑप्शन बाय के लिए दिया था. एंड I think I can show you in the premium groups here. I'll show you. मैंने पेज इंडस्ट्रीज का ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था. डॉक्टर रेड्डीज, पीएनबी, मैकडोवेल, हिंद, अल्ट्राटेक, एस्ट्रल. पेज इंडस्ट्री कहाँ पे है? डॉक्टर रेड्डीज, एस्ट्रल, अबॉट. हियर इज पेज इंडस्ट्रीज, राइट? ये मैंने कौन सी डेट को दिया था? ट्यूसडे को दिया था. पेज इंडस्ट्री की 34,000 की कॉल दी थी मैंने, एंड इसका टारगेट 1,000 दिया था पॉइंट्स का, राइट? दैट मीन्स 1100 पे ये कॉल थी और मैंने इसका 2100 का टारगेट दिया था. आज के दिन आप देखो इस कॉल का क्या हुआ है. ये कॉल कहाँ पे पहुंची है? 3000. मतलब ये देखिए आप, इस कॉल में आज ये हुआ है. It has just blasted up, unstop. It just was unstoppable, right? इसने आज हाई लगाया है 37,008 का. आज इसने पिछले ट्यूसडे को दिया था. ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया हम लोग को होल्ड करे हुए, और वहां से यहाँ तक का इसने रन अप दिया है. ब्यूटिफुल मूव दिस स्टॉक हैज गिवन, right? So that's the power of stock pro. That is how we work, that is how we filter out good trades and give it to you. और अगर अपने ट्विटर पे भी आप अवेलेबल, आप मुझे फॉलो करते हो, तो आपने देखा होगा आज मैंने एक ट्रेड दिया था रिलैक्सो का, यहाँ पे भी दिया था, और एक ट्रेड दिया चेन्नई पेट्रो का. कीप देम ऑन रडार. आई एम 100% श्योर यू विल गेन गुड मनी. सो अब बात कर लेते हैं जल्दी से कि मेरे स्टॉक, मेरे रडार पे ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें एक अच्छा खासा ब्लास्ट मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है. एक ही स्टॉक दे रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं दे रही हूँ. तो कीप इट ऑन रडार. अदानी एंटरप्राइजेस. कहाँ तक का वेट करना है हमको? ये 1570 का हमको वेट करना है. 1570 के बाद आपको स्ट्रेट अप 50 पॉइंट्स तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? ये जो पूरा मूवमेंट है ये आपको मिलेगा, और अगर ये मूवमेंट ये क्रॉस हो जाता है देन 1700 का इसका टारगेट आपको 100% मिलेगा, राइट? तो ये एक स्टॉक मैं आपको दे रही हूँ. वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी बिकॉज आई एम मेकिंग अनदर वीडियो फॉर यू ऑल where I'm going to give you a stock which is going to be a multi-bagger, something like Dixon, something like Amber Enterprises, something like it's going to be in that category, right? So I'm going to give you a very very beautiful stock, and I'm going to invest tomorrow 5 lakh rupees in that. So stay tuned and watch. The next video will be also uploaded in few minutes. So take care. Market looks positive to me, although there was range boundness in the market, but market from any angle doesn't look negative. I'm expecting market to continue growing. A bit of profit booking here and there will keep coming, but that's part of the life, right? Without profit booking, market will not be able to really show strength, right? So when I say that, what I really mean here, आप देखोगे कि यहाँ पे देखो, अगर हम आज का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, आज का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, so यहाँ पे you will see that so many contracts have been written, like 1,33,700 something contracts have been written. That means this has been now made a base. 17,800 has been made a base. Market is going to go above this place only,
right? ये आज का हफ्ता था which has been expired. Now we can concentrate on the next week, and in the next week the fresh call writing, if you see on the put side, you see the more contracts written than on the call side. So hope for the best and really keep making good money, and all the best. Stay tuned, and if you have made money in any of the calls that you get here or any of the calls you get on my Telegram handle, please like, share, and subscribe the channel, and share the Telegram link with others, all the friends who have been losing, right? So share it with them. And meanwhile, I'm making another video for you about a beautiful stock which is just on the verge of becoming a multi-bagger. Take care. Bye bye.